Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my channel MathX World. Students, today we will learn about multiplication of integers. That how we have to multiply integers. As you already know, integers include both positive and negative numbers. So while multiplying integers, we have to consider signs also. If so, there are some basic four rules while multiplying integers. Number one is if both integers are positive, means both are positive numbers, then their product is also positive. If both integers are negative, then their product is also positive. If one integer is positive and other is negative, the product is negative. If one integer is negative and other is positive, the product is negative. Got it? Let's take an example. You get clear. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 × -7। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 इज इक्वल टू होता है 21। नाउ अब हम देखेंगे साइंस। देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्लस माइनस क्या आता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है, देख लें माइनस, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस। सो 3 × -7 इज इक्वल टू -21। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। -5 × -5। First we will multiply numbers. 5 into 5 25. Now consider signs. This is a negative integer, this is also a negative integer, so minus into minus is equal to plus. We have read that. So -5 into -5 is equal to 25. As you know that it is not mandatory to mention a plus, so we can also write it is only as 25. Okay, this also means plus 25, positive number. नेक्स्ट वन इज -4 × 5। सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 20। अब हम साइंस देखेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी बिकॉज के साथ कोई साइन नहीं था, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये देख लें आप, माइनस के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो -4 × 5 इज इक्वल टू -20। गॉट इट? टेक अनदर क्वेश्चन, -6 × -3। सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई नंबर्स। 6 × 3 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 18। आप देखते हैं हम साइंस, ये क्या एक नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये हमने पढ़ा है, माइनस और माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हूँ, तो आंसर क्या है प्लस। तो -6 × -3 इज इक्वल टू +18 और सिंपली 18। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज 7 × 6। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई नंबर। 7 × 6 = 42। नो कंसीडर साइंस। देखिए आप इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर कोई साइन मेंशन हो तो उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस इंटू प्लस किसके इक्वल होता है, ये देखें प्लस के इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा 7 × 6 इज इक्वल टू 42 और +42। गॉट इट? इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन प्लस बट नेसेसरी टू मेंशन माइनस। सो 7 × 6 इज इक्वल टू 42. So this question is complete. Hopefully students you get the point. If you have any doubt you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.